So, hello to all the defense aspirants and welcome to the Government Crackers. And in this session, we are going to discuss about the important defense current affair of 3rd December 2020. तो गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर जितने भी नए कैंडिडेट्स आए हैं उनको ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट क्रैकर्स पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें हम डेली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% होती है आपके एग्जामिनेशन में आने की, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस का हो, आईनेट का हो, एफकैट का हो, एसएसबीज हो, एफएसबीज हो या और अदर रिलेटेड एंट्रीज टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स। अब आपको किसी भी तरीके की टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी मैगज़ीन को लेकर के, न्यूज़पेपर्स को लेकर के, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहते हैं तो आपको उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रिसाइजली कंसाइज मटेरियल आपको मिलेगा जिसमें डेली एनालिसिस होता है कि क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को इंक्लूड करते हैं जो डिफेंस के ओरिएंटेशन से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है और आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इम्पॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स को और वन बाय वन डिस्कस करते हैं उन सभी को। चलिए कैंडिडेट्स, फर्स्टली डिस्कस करते हैं नेशनल न्यूज़ को। ठीक है, तो फर्स्ट नेशनल न्यूज़ आप सभी के लिए है, उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत inaugurated the Suryadhar Lake in the Dehradun. So important point related to this is Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat inaugurated the Suryadhar Lake at the Doiwala in Dehradun on 29 November 2020. The Suryadhar Lake is located in the tri-junction of the Haridwar, Rishikesh and Dehradun and has been built at the cost of 50.25 crores. It is 550 meter long, 28 meter wide and 10 meter deep with the capacity of 77,000 cubic meters. Okay. What are the benefits of this lake? We are going to discuss about that. The first one is the lake will address the drinking water and the irrigation need of nearly around 220 villages. Okay, so it will cover the requirement of the 20 villages. It would also become a major tourist and the water sports destination. Farmer of the area will get the water from the lake to irrigate their land for the 12 month in a year. So this is the biggest thing which is important about this lake. ओके कैंडिडेट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड न्यूज़ को, और सेकेंड न्यूज़ है इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर द एंटी शिप वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड. ओके, so what are the important point related to this news is that is India successfully test fired the anti-ship version of the BrahMos supersonic cruise missile from the Andaman and the Nicobar Island territory on the 1st December 2020. The test was conducted as a part of the ongoing trial-based conduction by the Indian Navy. The recent land attack version of the BrahMos super cruise missile was also successfully test fired from the same island, that is Andaman and the Nicobar Island territory on the 24th November. So all these tests are in the continuation process. So the BrahMos supersonic cruise missile is the world's fastest operational system in its class. Okay, let's discuss the next news. So candidates, next news, that is the third national news, is Ministry of INB produced the booklet title, that is the PM Modi and his government special relationship with the Sikhs. So the important point related to this is a booklet title, that is the PM Modi and the government special relationship with the Sikh, was released on the 30 November 2020 on the occasion of the birth anniversary of the Shri Guru Nanak Dev Ji. Then next point is the booklet was jointly inaugurated by the Union Minister of the Information and Broadcasting Shri Prakash Javadekar and the Union Minister of the Civil Aviation and Housing and Urban Affairs Shri Hardeep Singh Puri. It
produced by the Bureau of Outreach Communication under the Ministry of Information and Broadcasting and released in the three languages, that is Hindi, Punjabi and English. So now candidates, let's discuss the international newses. So the first one is, that is the Lahore is the world polluted city, followed by the New Delhi and the US air quality, that is US Air Quality Index. So the important point number one is Lahore, the cultural capital, that is the Pakistan, has been ranked as the world's most polluted city according to the air pollution data released by the US Air Quality Index. So that is also in the short form known as AQI, Air Quality Index, on the 30 November 2020. Lahore reported a particulate matter, that is the PM rating of 423, whereas the New Delhi stood second with the PM, that is the particulate matter is 229. That is almost the half of Pakistan, Lahore, while the Nepal capital Kathmandu ranked the third with the PM level is 178. So let's discuss what is actually AQI. सो न्यूज़ में आने वाले टर्म से रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम न्यूज़ में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट अबाउट द AQI. सो AQI क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज द AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इज रिलीज बाय द US Environmental Protection Agency, that is EPA, to give the people an idea of whether it's safe to breathe in the air. Then AQI is based on the level of the 5 major pollutants regulated by the EPA, that is the ground level, ozone, particulate matter, that is PM 2.5, carbon monoxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Then AQI measures the air quality by placing it on the scale of 0 to 500, where the air quality is regarded satisfactory if the AQI is under 50. Okay. सो नाउ कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करते हैं, दैट इज द बिजनेस एंड इकोनॉमी. सो द फर्स्ट वन इज, दैट इज OECD projects India's financial year 2021 GDP that is going to be contracted to -9.9% and forecasted the global GDP at -4.2 in 2020. So important point related to this is, in its latest economic outlook report, that the Organization of the Economic Cooperation and Development, that is also known as OECD, has marginally raised the GDP forecast of India to contract to 9.9% in 2020 to 21 financial year from its earlier projection to -10.2% in the September 2020. Then OECD expected that the GDP to rebound to 8% in 2021 to 22, that is financial year 22, and the 5% in 22 to 23 to the 23. In terms of the global economy, that is OECD expected that the world GDP to contract to 4.2% in 2020. This estimate was -4.5% in the September forecast. Then OECD has also projected that the world economy to grow 4.2% in 21 from the earlier forecast of the 5%. Also for 22 global GDP is projected to be 3.7%. सो कैंडिडेट्स आज कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं, अब उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं, दैट इज द संदीप कटारिया बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द ग्लोबल CEO ऑफ बाटा. So the footwear major Bata Shoe Organization has appointed Sandeep Kataria as a new global chief executive officer on the 30 November 2020 with the intermediate effect. Kataria is the first Indian to be appointed on the global role of Bata headquarters, that is Louisiana, Switzerland. He takes over the Alex Nassard, who stepped down after the almost 5 years in the role. Then before this, Kataria was the CEO of the Bata Indian since 2017. Under Kataria, Bata India managed to transform into the large footwear retail in the Indian with the relevantly short span. सो कैंडिडेट सेकेंड न्यूज़ है वो है आपकी सीनियर IAS ऑफिसर वर्षा जोशी अपॉइंटेड एज अ इंटरीम चेयरपर्सन ऑफ द NDDB.
So the government of the India has appointed the Varsha Joshi as a interim chairperson of the National Dairy Development Board, also known as NDDB. NDDB headquarter, that is Andhra, Gujarat. Her appointment will be effective from the 1st December 2020. She replaced the incumbent Dilip Rat, who tenure as a chairman of NDDB ended on the November 30, 2020. Prior to this, Joshi, as an IS officer of 1995 batch AGMUT cadre, was joint secretary of CDD, that is the Department of Animal Husbandry, and the Dairy Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. सो कैंडिडेट्स, आज कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी हैं, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द एबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी, दैट इज ऑन द 2nd December. सो नंबर 1 इज इंटरनेशनल डे ऑफ द एबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द 2nd December since 1986 by the United Nations General Assembly. Objective is eradicating the contemporary form of slavery such as trafficking in a person, sexual exploitation, and the worst form of child labor, forced marriage, and the forced recruitment of child for the use of armed conflict. The second one is National Pollution Control Day, and it is observed on the 2nd December. In India, the National Pollution Control Day is observed every year on the December 2nd to commemorate the life of a people lost in the unfortunate incidents of the Bhopal tragedy that occurred in the year of 1984 on the night of the 2nd and 3rd December. This year 2020 marked the 36th anniversary of the Bhopal gas tragedy. Though this day awareness is created about the rising pollution of the air, water and the soil, as well as shift the attention of the people with regard of Pollution Control Act. सो कैंडिडेट्स, ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं. इससे रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप फॉलो करिए, सीरीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स के इस चैनल को, और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप सभी को ये आने वाले अपडेट सबसे पहले मिलते रहें. और अगर आप लोग इन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक SSB, FSB, NSB, FCAT, CDS, NDA, INET, एयरमैन, नेवी SSR, MR, आर्मी सोल्जर एंड एयरमैन X and Y, तो इन फोटोज़ के ऊपर आप क्लिक जैसे ही करेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आपको आपका मटेरियल मिल जाएगा. ओके, या फिर आप governmentcrackers.com साइट पे भी जा सकते हैं, जो कि है govtcrackers.com. ओके, इस साइट के ऊपर जाने से आपको आपका मटेरियल मिल जाएगा आपके कोर्स से रिलेटेड, और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. सो आई होप ये सीरीज़ अब आपको अच्छी लग रही होगी. आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सीरीज़ कैसी लगी, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स को साइट के ऊपर. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के सेशन में. टिल नाउ, जय हिंद.